Welcome back to your favorite YouTube channel R International and I'm your trainer Deepak। आज का जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 5, 5.5 या 6 में कहीं पे भी रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ट्रबल होती है कि या फिर दे आर इन डिलेमा कि ये जो स्कोर है हमारा 5, 5.5 या 6 उसके आगे मींस के 8 प्लस कैसे ले जाए। तो स्पेशल वीडियो आपके लिए है, स्टे ट्यून एंड वीडियो लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्कोर कैसे अपस्केल हो सकता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ऐसे कुछ वोकेबलरी ऐसे वर्ड्स है कि जिसकी वजह से हमारा स्कोर कट जाता है। यस, द स्कोर हैज बीन चॉप्ड और हमारा स्कोर जो है कटता रहता है। रीजन सम ऑफ द इम्प्रॉपर वोकेबलरी, इनफॉर्मल वर्ड्स और आई वुड से ऐसे वर्ड्स के जो कई बार सभी बच्चे रिपीट करते हैं, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड शॉर्टलिस्ट किए हैं। So there are 15 major words, 15 ऐसे वर्ड्स है कि जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं, शॉर्टलिस्ट किए स्पेशली आपके लिए। वन बाय वन शुरू करते हैं कि एक कौन से वर्ड से उसे रिप्लेसमेंट कैसे दिया जा सकता है। लाइक व्हाट आर द वर्ड्स वी कैन यूज टू रिप्लेस दोज नॉर्मल और आई वुड से इनफॉर्मल वोकेबलरीज। अभी मैंने जैसे बोला कि देर आर सर्टेन वर्ड्स, तो उनमें से द फर्स्ट वर्ड लाइक मोस्ट कॉमन जो सभी जगह पे बच्चे यूज करते हैं व्हाइल इन राइटिंग और व्हाइल इन स्पीकिंग, दोनों सेक्शन में द वर्ड इज नाउअडेज। नाउअडेज ओके, ये जो वर्ड है कई जगह रिपीट होता है। सो रिपीटेशन की वजह से ये हमारा स्कोर है जो कट जाता है। और द अनदर थिंग इज दैट कि ये जो वर्ड है मोस्टली रिपीटेड है, सभी बच्चे यूज करते हैं। तो व्हाट इज द यूनिकनेस, हमारी जो रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, वी नॉट एबल टू मेंटेन द यूनिकनेस इन आवर रिस्पॉन्स। सो नाउअडेज की जगह उसके जो पॉसिबल सिनोनिम से हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल करंटली, एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट डे, इन द कंटेम्पररी टाइम्स और कंटेम्पररी एरा और these days, ऐसे वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल nowadays many governments are investing heavily in green energy solutions. So nowadays को replace करके हम बोल सकते हैं currently many government, at present many government, like in the present day many government। तो ऐसे यहाँ पे examples हो सकते हैं। second example for like लेते हैं कि at present there is a growing demand for electric vehicles as the world moves towards sustainability। तो ऐसा जो वर्ड है यहाँ पे नाउअडेज, उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ पॉसिबल सिनोनिम्स करंटली, एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट डे, इन कंटेम्पररी टाइम्स और दीज डेज। द सेकंड वर्ड इज आई वुड आर्ग्यू दैट। ये जो फ्रेज है लाइक कई जगह पे मैंने देखा है, कई बच्चे लाइक स्पीकिंग और राइटिंग में कॉन्स्टेंटली सेम ही वर्ड को रिपीट किए जा रहे हैं। सो उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ पॉसिबल सिनोनिम लाइक I would argue that का हो सकता है I believe that, in my opinion, I contend that, it seems to me that और I would assert that। ओके, जो ऐसे वर्ड है यहाँ पे हो सकते हैं I would argue that के। फॉर एग्जाम्पल in my opinion strict regulations are necessary to combat air pollution in cities। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड इट कैन बी लाइक I would assert that। ओके, I would argue है तो वहां कर दिया हमने I would assert that technology has played a pivotal role in improving healthcare services globally। तो इसे यहाँ पे पॉसिबल है I would argue that क्या हो सकता है I believe that, like I would argue that people are misusing environmental resources। तो उसका हो सकता है I believe that people are misusing, in my point of view, in my opinion, I contend that people are misusing environmental resources। सो थर्ड वन इज इन स्पाइट ऑफ। ए ऐसा वर्ड है कि जहां हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन दिखानी हो, जैसे कि वो वीक था फिर भी रेस जीत ली। सो इन स्पाइट ऑफ ही वाज वीक
he won the race। तो in spite of का possible synonyms हो सकता है despite, regardless of, notwithstanding, even though और फिर though, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे कि in spite of the economic downturn the company reported a profit last quarter। ओके सो यहाँ पे in spite of का हो सकता है despite of the economic downturn the company reported a profit last quarter। Second example, even though he was exhausted he continued to work late into the night to finish the project। तो ऐसे यहाँ पे in spite of है उसे रिपीट करने या फिर we would avoid repeating the same word in spite of। नंबर 4 दैट इज फॉर इंस्टेंस। जब हमें एग्जाम्पल स्टेट करने होते हैं, जब हम लाइक स्पीकिंग सेक्शन में हो या राइटिंग सेक्शन में, तो व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल। तो उसका पॉसिबल सिनोनिम्स लाइक फॉर इंस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल, सेकंड इज सच एज, थर्ड वन इज टू इलस्ट्रेट, फोर्थ वन इज लाइक और, फिफ्थ वन एज एन इलस्ट्रेशन। टू इलस्ट्रेट वर्ब, एज एन इलस्ट्रेशन नाउन। तो ऐसे यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं कि मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस का कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स यूज ऑफ सोलर पावर। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल या फिर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है तो उसको सच एज, टू इलस्ट्रेट ऐसे वर्ड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ऑप्टिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ड्राइविंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ऐसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस जब भी हम राइटिंग एंड स्पीकिंग में एग्जाम्पल स्टेट करने हो तो फॉर इंस्टेंस को हम फॉर एग्जाम्पल, टू इलस्ट्रेट, लाइक, एज एन इलस्ट्रेशन, सच एज, ऐसे लाइक रैंडमली वर्ड्स यूज करेंगे, ना कि एक ही वर्ड फॉर इंस्टेंस। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज अ ड्यू टू। जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं कई रीजन दिखाने हो कि इसकी वजह से ये हुआ, बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दैट, तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं ड्यू टू। रीजंस जब हमने रीजनिंग क्लियर करना है तब कि इसकी वजह से ये होता है, तो ड्यू टू को हम रिप्लेस करेंगे विथ बिकॉज ऑफ। ओके, ड्यू टू illiteracy, people are not able to, or it can be like due to illiteracy people are not able to employ full time or get employment full time। so due to का हो सकता है because of, first one is because of, second one is owing to, third one is as a result, on account of, या फिर it can be thanks to something। okay, example देखते हैं फर्स्ट। so because of the pandemic, जो अभी फिलहाल फिर से शुरू हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मैनी बिजनेसेस हैड टू क्लोज टेम्पररी टू कंप्लाई विथ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। सेकंड एग्जांपल, द गेम वाज कैंसल्ड ड्यू टू द हैवी रेन एंड अनसेफ फील्ड कंडीशन। तो सेंटेंस में जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, सेंटेंस की शुरुआत में भी डाल सकते हैं या फिर एंड में, डिपेंड्स आपका जो मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा। नंबर 6 इज बाय कॉन्ट्रास्ट। इन शॉर्ट, जब भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन दिखानी हो, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिवील द कॉन्ट्रास्ट इन बिटवीन टू स्टेटमेंट, तो वहां पे हम यूज करते हैं बाय कॉन्ट्रास्ट। तो उसके पॉसिबल सिनोनिम्स लाइक इन कंपैरिजन, बाय कॉन्ट्रास्ट का फर्स्ट पॉसिबल सिनोनिम्स होगा इन कंपैरिजन, सेकंड ऑन द अदर हैंड, थर्ड इट लाइक इन अपोजिशन, ऑन द कॉन्ट्ररी और कन्वर्जली। तो ऐसे यहाँ पे पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन कंपैरिजन, बाय कॉन्ट्रास्ट का हमने कर दिया इन कंपैरिजन, अर्बन एरिया typically have access to more jobs opportunity and better healthcare services। First example, second it can be on the other hand। okay, हमने यहाँ पे by contrast लिखा है तो it can be on the other hand, rural communities often face challenges like limited access to education and healthcare। The next one, number 7 is as a result of। जब कुछ हुआ है तो उसका हमें आउटकम दिखाना है, चाहे इलिटरेसी की वजह से हो या कुछ भी हो, तो आउटकम दिखाना हो तो वहां पे हम ये फ्रेज यूज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ। तो उसको रिप्लेसमेंट मिल सकता है विद पॉसिबल सिनोनिम्स ड्यू टू। फर्स्ट वन इज ड्यू टू, सेकंड वन इज ओविंग टू, बिकॉज ऑफ,
in consequence of और as a consequence of, in consequence of और as like आप जो सेंटेंस बनाते हो उसके फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज लाइक एज ए रिजल्ट ऑफ द कर सकते हैं ड्यू टू rise in global temperature, because of or due to rise in global temperature many species are at risk of extinction। कहीं ऐसी जातियां है, प्रजाति है, जीवन जो है कि like they are being disappearing। okay, second example, as a result of increased awareness about the importance of recycling more people are participating in waste segregation program, waste management program, waste segregation program। तो ऐसे यहाँ पे as a result of जो है उसको हम replacement दे सकते हैं। Number 8 is ensure, ensuring that, to ensure, ऐसे जो यहाँ पे वर्ड है श्योरिटी डिस्क्लोज करने के लिए, तो उसको हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं to ensure का हो सकता है guarantee। Second is like make certain or certainly, either make certain or certainly, secure, assure, or it can be confirm as well। okay, I ensure, I confirm, I assure, I secure, I guarantee, ऐसे यहाँ पे वर्ड्स हम सिनोनिम्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। सो एंश्योर का हो सकता है गवर्नमेंट मस्ट गारंटी, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइक रिप्लेसमेंट या फिर पॉसिबल सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, इट इज एसेंशियल टू मेक सर्टेन और इट इज एसेंशियल सर्टेनली। सो इट इज एसेंशियल टू मेक सर्टेन दैट all students aware of the new regulations before they take the examination or examination, either before they take the examination or before they appear in the exam। Next, number 9 is enable। okay, जब भी हमें कुछ like kind of permissive words और kind of agreements ऐसे words है यहाँ पे हम use करते हैं enable। तो उसका possible synonyms हो सकता है allow, government should enable, government should allow, और गवर्नमेंट शुड एम्पावर, अलाउ, एम्पावर और फैसिलिटेट, मेक पॉसिबल और गिव द मीन्स, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल्स डॉक्टर्स टू डायग्नोस डिसीज विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। ओके, सो इनेबल्स डॉक्टर्स लाइक कैन बी फैसिलिटेट द डॉक्टर्स और अलाउज द डॉक्टर्स और एम्पावर द डॉक्टर्स, यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं। सेकंड इज लाइक द न्यू सिस्टम विल facilitate faster processing of applications, reducing wait times for applicants। so ऐसे यहाँ पे अगर हम वर्ड्स यूज करेंगे 5.56 के कहीं पे भी अगर हम है तो आराम से 7, 7+, 8, 8+ और इवन वी कैन रीच टू 9 अगर हमारा सारा का सारा बैंड डिस्क्रिप्टर जो भी है मेंटेन किया है तो फुल स्कोर भी पॉसिबल है। नंबर 10 दैट इज हैंस, HENCE, हैंस। जो यहाँ पे वर्ड है हैंस है जो सो की जगह हम यूज करते हैं, सो है, therefore है तो hence भी है, तो hence रिपीट नहीं करेंगे हम, फॉर्मल है लेकिन रिपीटेशन से बचेंगे। so उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लाइक सिनोनिम्स आर, फर्स्ट वन इज therefore, सेकंड इज लाइक thus, THUS, और थर्ड वन इज as a result, consequently और for these reason, ऐसे यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the company has been unable to meet its production targets, hence, therefore, hence का हो सकता है यहाँ पे therefore they are revising their manufacturing process, so hence they are revising, therefore they are revising, as a result they are revising, ऐसे यहाँ पे words हम use करेंगे। Second example, the research found that regular exercise improves mental health, therefore it should be encouraged as a part of healthy lifestyle, therefore or consequently or for this reason, because of that reason it should be encouraged as a part of routine or healthy lifestyle। नंबर 11 इज लैक, LSE के लैक, कुछ कम होना, कमी होना, कुछ नहीं होना, जो है उससे कम होना, इट इज कॉल्ड लैक ऑफ समथिंग, लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। तो ऐसे जो वर्ड है यहाँ पे लैक, उसके पॉसिबल हो सकते हैं शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन, लिमिटेशन ऑफ समथिंग, सो डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, एब्सेंस, insufficiency और deprivation। so ऐसे यहाँ पे words हो सकते हैं। example, there is a shortage, there is a lack of, so there is a shortage of affordable housing in major cities, causing many people to live in
substandard conditions. Okay, it's kind of like a poor condition. Substandard in the sense the poor condition. Second example is like the absence of clear guidelines in the policy lead to confusion among the public. So the absence, it can be the deficiency or the shortage or the insufficiency or the deprivation. So ऐसे यहाँ पे according to आपके sentence के जो meaning है, emotion है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वोकेबलरी इन टर्म्स ऑफ लैक जो है उसके फॉर्मल सिनोनिम्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर 12 इज इनवैल्यूएबल। जब हम किसी को लाइक वैल्यू दिखानी हो, समथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं इनवैल्यूएबल। तो रिपीट ना हो के लिए उसके पॉसिबल सिनोनिम से यहाँ पे प्राइसलेस, something is priceless, education is considered as the priceless bond for something, it is like a priceless value, it is something invaluable. Okay, so first one is priceless, जो invaluable है उसका हो सकता है synonyms priceless, irreplaceable, indispensable, essential और crucial, critical, extremely useful, extremely important, ऐसे words यहाँ पे हम use कर सकते हैं। For example, first one, the knowledge gained from experience is irreplaceable, like we cannot replace, so it is irreplaceable and cannot be learned from textbook alone. So it is called a practical experience or practical knowledge. Second example is like a volunteer work offers invaluable benefit to both individual and the community, fostering a sense of responsibility and social cohesion. So ऐसे यहाँ पे invaluable का यहाँ पे possible synonyms हम use करेंगे। नंबर 13 पैरामाउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी हम बताते हैं किसी को लाइक कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे इंपॉर्टेंट वैल्यू देनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो वहां पे हम यूज करते हैं पैरामाउंट। लाइक एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए पैरामाउंट थिंग, paramount object or paramount skill for each and everyone for the progression. So paramount can be replaced with a crucial, critical. Okay, paramount can be replaced with a crucial, first one. Second is vital, it is vital for people, it is crucial, it is critical, it is paramount or essential, principal or supreme, primarily, so it can be supreme. Example, it is of crucial importance or it has a crucial importance that we address the issue of climate change immediately before it causes irreversible damage. ऐसे डैमेज करे कि जो अभी चेंज ना हो सके, so irreversible damages. Second example, the safety of passengers is paramount, it is vital or it is essential in the aviation industry, which is why rigorous security measures are in a place. नंबर 14 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी है लाइक जब हम बोलते हैं कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट दिखानी है, एक्सट्रीमली हाई इंपॉर्टेंट, तो वहां पे ये वर्ड हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट समथिंग। सो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटेंशियल, extremely important, significant value, substantial value. Education has a significant value, so education has a substantial value or considerable. Second possible synonyms is considerable. The third one is major. The fourth one is noteworthy, N-O-T-E, yeah, not N-O-T, N-O-T-E, not worthy and important, extremely important. ऐसे यहाँ पे हम possible synonyms use कर सकते हैं। Example है, the recent reform have led to a substantial improvement in public sector efficiency. So substantial or considerable. Okay, यहाँ पे ऐसे words use सकते हैं। Second example, there has been a major shift in consumer behavior due to the rise of e-commerce and digital shopping. So a major shift, it can be considerable shift or noteworthy or important shift, like a changes, shift in the sense के जो behavior है उसमें changes हुए हैं, positive changes. The last one, number 15 is if conditional clause. जब हम यहाँ पे like complex sentence use करना चाहते हैं, condition, अगर ये है तो वो है, ऐसा है तो वैसा है, अगर लोग पढ़ाई करेंगे तो उसका फ्यूचर डेवलप होगा। People will study, if people study or people have knowledge or if people have education, they will be able to shape their future brighter. तो ऐसे यहाँ पे जो conditional clause है, तो ऐसे हमारी राइटिंग एंड स्पीकिंग में बहुत सारी कंडीशंस आती है कि जहां हमें इफ वाले सेंटेंसेस जो है कंडीशनल क्लॉजेस और कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इफ एंड इफ हमने कंटिन्यूअसली यूज किया तो स्कोर आने के बजाय लाइक बढ़ने की जगह कट जाता है। तो इफ को कैसे रिप्लेस करेंगे? सो इफ कैन बी रिप्लेस विथ प्रोवाइडेड इट, हाँ आपको क्या है कि क्लॉजेस की जो कंडीशन है, ओके,
लाइक डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसकी पोजीशन है आपको चेंज करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने लाइक कंडीशनल क्लॉज का एक पूरा वीडियो हमारे YouTube चैनल आर इंटरनेशनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ग्रामर सेक्शन में है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इफ है कैन बी रिप्लेस विथ प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ऑन द कंडीशन दैट, अज्यूमिंग दैट और इन द इवन दैट। एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट द वेदर इंप्रूव्स द आउटडोर इवेंट विल प्रोसीड एज प्लान। ओके, इफ अगर यहाँ पे यूज करें कि इफ वेदर इंप्रूव्स कॉमा द आउटडोर इवेंट विल प्रोसेस एज प्लान, इफ की जगह हमने यहाँ यूज किया प्लान दैट। सेकंड एग्जांपल, ऑन द कंडीशन दैट और इन द कंडीशन ऑफ दैट द रिक्वायर्ड फंडिंग इज सिक्योर्ड, द रिसर्च प्रोजेक्ट विल बिगिन नेक्स्ट मंथ। इफ द रिक्वायर्ड फंडिंग इज सिक्योर्ड, इफ को हमने यहाँ पे स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर दिया विथ ऑन द कंडीशन दैट, तो ऐसे यहाँ पे इफ कंडीशनल क्लॉज है उसे हम रिप्लेसमेंट देंगे विथ पॉसिबल प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ऑन द कंडीशन दैट, अज्यूमिंग दैट और इन द इवन दैट। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइक मोस्ट कॉमन रिपीटेड 15 वर्ड्स, 15 ऐसे वर्ड्स है जो बारी बारी सभी के मैंने स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन में देखे हैं। तो उसकी जगह पे अगर हम आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे, सिनोनिम्स, फॉर्मल सिनोनिम्स यूज करेंगे, आई एम श्योर, आई अश्योर यू, आई एम गिविंग यू द अश्योरिटी और गारंटी, आपका जो स्कोर है 5-6 के आसपास कहीं पे भी अगर रुक जाता है तो सीधा जंप होगा 6, 7 या 8 प्लस आराम से इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी। तो ऐसे वर्ड्स यूज करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेसन्स और टीचिंग रिगार्डिंग टू आइल्स स्पेशली आपका स्कोर बूस्टर करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ बने रहिए। उसे अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।